Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. As I promised that I'll be coming up with some ways where you can improve your communication skills, and I'm here. So आज की इस वीडियो में we are going to talk about how to improve the communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए क्योंकि आप एक सोशल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. यू आर लिविंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट वेर यू आर फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. इट्स बेसिकली योर नीड to effectively communicate whatever your thoughts are, your opinions are, and it helps you to build a social capital as well. तो बहुत ही ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ जो आप कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं दैट इज़ आई कॉन्टैक्ट. Yes, eye contact is very important thing in the communication. Until and unless you don't make eye contact, you cannot make a better communication. Eye contact conveys to your listener that you are confident enough. तो एक रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से आई कांटेक्ट किया करें whenever you are talking to them. That gives a really positive image of you as a speaker. तो eye contact is very important. Secondly, I would say that you must choose your replies, or you must tailor them beforehand, or you must plan your responses. अब इससे मेरी मुराद क्या है वो ये कि most of the times when we are talking we choose the phrases and sentences at the spur of the moment, which is very good. It helps us, हाजिर जवाबी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है communication में, but at times to make your communication more discreet, it more influensive, आपको फिर अपने responses को tailor करना पड़ता है. एंड वो मैं भी करती हूँ, और वो हर एक इंसान करता होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं. ये मैं चीज़ें जो आपको बताती हूँ ये मैं थोड़ी रिसर्च करके किताबों से पढ़ के फिर ही बता रही होती हूँ. तो डेफिनेटली जो लोग अच्छी कम्युनिकेशंस रखते हैं उनके पास टेलर्ड रिप्लाईज होते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. व्हेन एवर समबडी प्रेज्ड मी, आई डिड नॉट हैड द आइडिया दैट व्हाट आई शुड respond, like what should I say in return. अब किसी ने तारीफ़ कर दी, सो आई वॉज आउट ऑफ द वर्ड सेइंग थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल, जी शुक्रिया, सीम्ड मोर क्लीशेड एंड मोर एग्जैजरेटेड. तो मैंने इसके लिए अपना रिस्पॉन्स जो है टेलर किया कि अब कोई भी अगर मेरी तारीफ़ करता है उससे आई एम हम्बल्ड, बिकॉज लिटरली इफ समबडी praises me, so I feel humbled. इसीलिए मैंने ये टेलर्ड अब रिस्पॉन्स है कि यूनिफॉर्म के कोई भी तारीफ़ करता है तो ऐसे आई एम वेरी हम्बल्ड, आई एम वेरी हम्बल्ड, एंड दैट ऑल्सो कन्वेज a very in like an effective image कि यार ठीक है, they are not at least haughty or arrogant whenever you are praising someone. तो yes, tailor your responses. आपको पता होना चाहिए कि whenever somebody is criticizing you, what you are going to say. When somebody is praising you, what you are going to say. When you are in a situation where you are facing somebody being angry on you, what you are going to say. तो ये चीज़ें, ये responses आपको tailored होने चाहिए. इसीलिए आपकी जो communication है वो affect होती है और अच्छे तरीके से होती है. Besides that, you need to be very precise. अब ये मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से मैंने लिया है. ये मैंने लिया है जी 48 रूल्स ऑफ पावर, एक किताब है, उसमें उसने एक रूल 48 रूल्स ऑफ पावर में उसने ये भी कहा था कि आप साइलेंट रहा करें. ठीक है, अब साइलेंट रहना कम्युनिकेशन की बिल्कुल एंटीथेटिकल हो जाता है, लेकिन बिलीव यू मी, नो रिस्पॉन्स इज स्टिल अ कम्युनिकेशन, इज स्टिल अ रिस्पॉन्स. ठीक है, तो बी वेरी प्रिसाइज, जो है प्रिसाइज रहें. प्रिसाइज रहने से ये मतलब होता है कि आप थोड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं. अगर आप बात को लंबा करेंगे, वैग हो जाती है बात. अगर आप बात को जो है खींचेंगे, रिपीटेशन हो जाती है जो कि लिसनर को बिल्कुल पसंद नहीं होती. तो मेक श्योर दैट योर रिप्लाईज आर वेरी कंसाइज टू द पॉइंट, एंड दे आर कन्वेइंग इन वेरी. एक मुझे एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा था मेरे एक उस्ताद ने. उसने कहा था कि सबा, देयर शुड बी एन इकोनॉमी ऑफ द वर्ड्स. तो वर्ड्स को जो है ना बहुत अच्छे से सोच समझ के प्रिसाइजली इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है जो सीखना चाहिए इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सी उसके बाद जो है आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं. अब नॉन वर्बल में क्या आ जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, लाइक एंड योर बॉडी लैंग्वेज आ जाती है. अब जैसे मैं हूँ, व्हेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, आई एम मूविंग माई हैंड्स बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट मूविंग माई हैंड्स, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन.
And besides that, I am raising my eyebrows, I am like rolling my eyes, I'm sometimes, blinking them, and at times, I'm giving you this smile face, and at times, I'm conveying this with a very serious gesture. So आपके gestures, facial expressions and your body language counts a lot, believe you me, in communication. तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप नॉन वर्बल क्यूज़ का वर्बल क्यूज़ के साथ बड़ा ध्यान रखा करें, दैट हाउ यू आर यूजिंग योर हैंड्स, how you're using your facial expressions, and what kind of gestures are you giving to the listeners. That means a lot. उसके बाद जो है आपकी, देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर भी हों. That people should communicate with you whatever they are feeling. तो जब आप एक अच्छे लिसनर होते हैं, एक अच्छे लिसनर की एक क्वालिटी होती है that he or she, you know, is very much responsive to what others are saying, and he or she does not listen to someone because for the listening sake only, but for also for the comprehensive sake, like for understanding and for communicating back. एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है अच्छी तरह इसलिए भी सुनता है कि उसको रिप्लाई बैक अच्छा कर सके, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सही तरीके से सुनते हो अगले की बात. तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा लिसनर होना भी ज़रूरी है, एंड एक्टिव लिसनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन. सो काइंडली you should be making yourself a good listener and an active listener. पैसिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके बाद भी कभी बात करेंगे, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक. Apart from that, your tone matters a lot. Literally, if you are saying a right thing with the wrong tone, definitely you are going to leave a very bad impression on your listeners. Your tone should always be moderate, even if you are talking in anger. It must convey that you have an enough sense to cope up with your anger at the time when it's not. तो आपकी जो टोन है, आपकी जो पिच है, आपकी जो इंटोनेशन है, आपके जो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स हैं आपकी स्पीच में, तो ये चीज़ें जो है आपको उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि टोन अगर आपकी ठीक नहीं है, एट टाइम्स वी हैव अ सार्केस्टिक टोन, एट टाइम्स वी हैव अ रूड पिच, तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए. आपकी टोन इतनी मॉडरेट हो, इतनी इन लाइक engaging हो, और इतनी like it should convey like the that what you want to say. Even if you want to become ironic or sardonic, it must convey your tone. So this is the thing, you need to improve it, and you need to work on this if you want to improve your communication skills. उसके अलावा जी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही मैटर करती है. रिसेंटली आई वाज रीडिंग दिस बुक ऑन द effects of the pleasure. तो उसमें एक बात वो ये भी बताती है बंदी, कि मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, आई डेफिनेटली फॉलो इट अप. तो उसमें एक बात जो है वो ये भी बता रही होती है कि आपके लिए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करती है. फॉर इंस्टेंस, वाई आई से दैट इट मैटर्स अ लॉट इन द कम्युनिकेशन. फॉर इंस्टेंस, there are certain things that triggers your emotions whenever somebody is speaking to you. For example, if you failed an exam and somebody says that, oh sorry, you failed this exam, you definitely feel bad. So you have to identify that what kind of responses trigger your emotions whenever someone is speaking to you. ये भी तो है ना कि आप कम्युनिकेशन में सिर्फ आप नहीं स्पीक कर रहे होते, अगला भी स्पीक कर रहा होता है. आपको ये भी देखना होता है कि जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके इमोशंस को कहाँ तक जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ द थिंग. तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी अपनी काम करें. I'll make sure that I make a video on the emotional intelligence as well. बड़े काम की चीज़ है. आज तक दुनिया में जब हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं एंड अर्ली 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो IQ बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी इंटेलिजेंट इंपॉर्टेंट. लेकिन अब लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नॉट ओनली इन द कम्युनिकेशन पार्ट बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स एज वेल. फॉर इंस्टेंस योर जॉब इंटरव्यूज़, वो ये भी देख रहे होते हैं कि
जो है प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल होने के लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत होती है अलॉन्ग विद योर आईक्यू। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके अलावा जी, यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। हम बहुत सारी मतलब हम जितनी भी कम्युनिकेशन हो मतलब करते हैं अपनी लाइफ में, it is going without a strategy. By strategy I mean that you should know that what kind of in communication style you are going to pick. Either it's going to be formal, either it's going to be informal, either it's going to be rude, either it's going to be a bit moderate, either it's going to be dependent on the situation or your moods or upon the people you are communicating with. तो कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी तैयार करना ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कर लेनी चाहिए। आई हैव प्रिपेयर्ड माई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी दैट आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू शेयर है बिकॉज इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड यू माइट फाइंड इट बोरिंग एज वेल। तो इसीलिए वो नहीं शेयर करते, आप लोग अपनी बनाएं, हाँ मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। उसके बाद जी आपके लिए, स्पेशली मेरे लिए, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन मैं समझती हूँ ये मेरी तरफ से एक कम्युनिकेशन की जो है, अच्छी कम्युनिकेशन की ये भी एक निशानी है कि हाउ मच रिस्पेक्टफुल यू आर टू द पीपल यू आर कम्युनिकेटिंग। इफ़ you are a good communicator but you cannot respect the people you are talking to, so I think that doesn't makes you a better person. तो आप जब भी किसी से गुफ्तगू करें, मेक श्योर कि उनको ये फील हो रहा हो कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको ये कभी भी आपसे फील ना हो कि यार दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम इन एनी वे, और आप उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पा रहे बात करते हुए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। Whenever you are talking, make sure that you respect everyone, despite of their race, despite of their color, despite of their age, and despite of the differences that you are having with the people, despite of your personal bias. तो ये चीज़ें साइड पे रख के अगर आप किसी से बात करें तो आप एक अच्छी कम्युनिकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा जी आपको, अगर आपको ज़्यादा इम्प्रूव करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे भी काम किया करें। Observation, I mean that whenever you are in a day-to-day conversation, you need to make sure that you are observing what you're saying and how do you respond to certain things in your life. आप डे टू डे जो कन्वर्जेशंस कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं। आर यू एबल टू convey your opinions, your thoughts and your beliefs to the people without offending their beliefs, their thoughts and their opinions। तो डे टू डे अपनी कम्युनिकेशन की ऑब्जर्वेशन रखा करें, और जैसे आप खुद ऑब्जर्वेशन रखेंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू want to remove from your communication and lots of things that you want to add. So observation is the key. Please work on these things, and I am sure that if you will be working on these things, because most of the people say that these things doesn't work because you don't implement them. Implementation is the key. Implement them, and I hope that it helps you in your communication. Thank you so much.